Assalamu alaikum. I welcome to all the students on the forum of Masters of Medical Knowledge, MMK Academy. I am Dr. Nida. Today, the topic of our lecture is kidney and the nephron. So, we start with the kidney and the nephron. अब तक हमने क्या डिस्कस किया? अब तक हमने किडनी में नेफ्रॉन डिस्कस किया. इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. देन हमने स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी को अच्छे से डिस्कस किया, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर इट इज कॉल्ड फाइब्रस कैप्सूल. देन वी हैव कॉर्टेक्स, आउटर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स. इनसाइड वी हैव मेडुला. मेडुला के अंदर हमारे पास ट्रायंगुलर शेप्ड इन दिस ट्रायंगुलर शेप इज कॉल्ड रीनल पिरामिड्स. In between the renal pyramids, there is a space which serve as a blood vessel. और इसको हम लोग क्या कहते हैं? Renal. हम लोग इसको spaces कहते हैं. Then we have the papillae. The tip of the renal pyramids are called the papillae, which are connected to the major calyxes, minor calyxes. The structure which lies in between the kidney, इसको हम लोग pelvis कहते हैं. Renal pelvis. ये collect करती है renal pelvis all the urine from all major और minor calyxes, और फिर ये आ जाते हैं into ureter. अब हम लोग डिस्कस करते हैं functions of the kidney. The first important function of kidney is the excretory function. So excretion means the substance which the waste product आपके दो or the substances which are excreted from the urine. They may be metabolites, drugs, and the toxin. The toxin may be the urea that is formed from metabolism of the amino acid creatinine, which is the muscle formed from the muscle creatinine, uric acid, these are the nucleic acid, and the end product of hemoglobin, that is breakdown, that is bilirubin, and the metabolites of hormone. This is the excretory function of the kidney. So अगर आप डायग्राम की तरफ आओ, सो हमारे पास एक्सक्रीटरी फंक्शन फ्रॉम द यूरिटर से एक्सक्रीशन हो जाएगी, दैट इज फ्रॉम पास्ट फ्रॉम ब्लैडर टू द आउटसाइड. ठीक है, which are not necessary for our body. Second important function of kidney to maintain the homeostatic balance. What is homeostasis? Maintenance of nearly constant conditions in the internal environment of the body. It is called homeostasis. So it is very much important function है kidney का कि ये homeostasis को maintain करती है. अब ये क्या क्या चीजें maintain करती है? First, water balance. Then maintenance of electrolyte, maintenance of acid-base balance, that is pH को maintain करता है kidney, and also minerals, calcium, phosphorus and magnesium, इनको ये maintain करता है. Then third important function of the kidney is the endocrine function. Endocrine function means secretion of the hormone. So कौन सा hormone released होता है? That is renin. In the kidney, there are the juxtaglomerular cells. These juxtaglomerular cells, they secretes the renin, and renin इसका बहुत important function है to in the regulation of the blood pressure. So अगर blood pressure हमारा false हो जाता है तो kidney में juxtaglomerular apparatus है जो release करता है renin. सो रेनिन कहाँ से आया? फ्रॉम द किडनी. हमारे पास लिवर है, लिवर से रिलीज होता है एंजियोटेंसिनोजन, जहां पर रेनिन एक्ट करता है एंड देन ये कन्वर्ट करता है इस एंजियोटेंसिनोजन को इनटू एंजियोटेंसिन 1. देन लंग्स, वहां से हमारे पास एक एंजाइम निकलता है जिसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं. ये एक्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 पर एंड देन कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 2, एंड फाइनली हमारे पास ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है. एंड ऑल्सो एल्डोस्टेरोन हमारे पास आता है, सो ये सोडियम रिटेंशन करता है, फाइनली बीपी इंक्रीज. सो ये सब कैसे हुआ? फर्स्ट रेनिन. So the most important function of the kidney, endocrine function, release of the renin. And then another hormonal function of the kidney is the release of the hormone called the erythropoietin hormone, which are released from the endothelial cells of the peritubular capillaries, and they will increase RBC's production. So increased RBC production, very much important stimulus is the erythropoietin, which are released from the peritubular capillaries of the
renal cortexes. Then endocrine function is the release of the prostaglandins. So there are three endocrine functions. First endocrine functions हमारे पास क्या है कि release of the renin, then release of the erythropoietin, release of the prostaglandin, and then हमारे पास है vitamin D की conversion. So, in the kidney, the most important hormone is alpha 1 hydrolase enzyme. This enzyme is present in the kidney, and when there is effect of the parathyroid hormone, ये parathyroid hormone इसका आप मेरा लिंक देख सकते हैं फ्रॉम द MMK अकेडमी में हमने पैराथायरॉइड हार्मोन को अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है. वहां पर द रोल ऑफ द पैराथायरॉइड हार्मोन ऑन विटामिन डी एंड द कैल्शियम की रेगुलेशन में था. यू कैन सी दिस लिंक. Then हमारे पास when there is action under the action of the parathyroid hormone, kidney में alpha 1 hydrolase enzyme released होता है which convert the vitamin D3 into the active form, that is 1,25 dihydroxycholecalciferol. So there in the kidney the important functions are regulation of the blood pressure, excretion of the waste product, endocrine hormones, and then there is also gluconeogenesis, that is formation of the glucose. Thank you on the forum of MMK Masters of Medical Knowledge. Thank you so much.